Everyone, welcome back to my channel. Now we have started with chapter 1, that is cell, the structural and functional unit of life. Just take your Selena concise book and study with me. This is part 2 of this video. Part 1 I have uploaded, so do watch that video before this video. I will give the video an I button above, or you can go in my channel playlist. In that cell ICSE 10 biology, like that one playlist is there. Go in that and check the part 1 of this video. Now, what are organelles? Organelles are the specialized and membrane bound living structures in a cell concerned with definite functions. Okay, this is the definition of organelles. Organelles definition, it can be asked, so do learn this. Okay, now the living parts of a cell, which consist of cytoplasm, nucleus, and other living bodies, are collectively called protoplasm or protoplast. The later term, protoplast, is more appropriately used for a plant cell after the removal of cell wall. The living bodies called organelles are the same in both plants and animal cells except for cell wall and chloroplast present in plant cells only, and centrosome with centrioles present in animal cells only. This you must know what is present in only plant cells and what is present in only animal cells, that is centrosome with centrioles present in animal cell, chloroplast present in plant cells only. This you must know. The various organelles are now, it can be asked to name various organelles in a cell. So that are nucleus, nucleolus, mitochondria, endoplasmic reticulum, ribosomes, Golgi bodies, lysosomes. The non-living parts of a cell, that are vacuoles and granules. These two are non-living and they are also called as cell inclusions. Okay, they are also called as cell inclusions. Now cell membrane. Now we will be studying one part of a cell and their main characteristic and main functions. This is definitely asked in exam, so you have to learn full this table. Don't be like this is very big and it can't be. So learn this table. First is cell membrane. This is how cell membrane looks and it is a picture of a book. This outer covering of blue is cell wall and after that green one is cell membrane. Now characteristics. Wait a minute. Chief functions. Separates the contents of cell from its surrounding, that are function of cell membrane, that is also called as plasma membrane. Regulates the entry of certain solutes and ions. Maintain shape of the cell in animal cells only. In animal cell, what is there? In animal cell, cell wall is not there. Okay, cell wall is only in plant cell. So outer covering is cell membrane of animal cell. So it maintains the shape of the cell in animal cells. That's why here it is written in animal cells only, because in animal cells cell wall is not there. Now cell wall. Characteristics. It is outermost in plant cells. It is non-living rigid layer surrounding the plasma membrane. It is freely permeable and it is composed of cellulose. Okay, it is composed of cellulose. What are chief functions? Gives rigidity and shape to the plant cell. Allows substances in solution to enter and leave the cell without hindrance. Yes, it is semi-permeable, means it is freely permeable. सो फ्रीली परमिएबल मीन्स अगर कोई भी उसके अंदर जाने की कोशिश करता है तो वो आराम से चला जाता है. उसे कोई ये नहीं है कि आप कोई कुछ ही सब्सटेंसेस को बेच सकते हो. जैसे सेमी परमिएबल सेल मेम्ब्रेन है. सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट होता है एनिमल सेल में, वो सेमी परमिएबल होता है. उसके ऊपर फाइन पोर्स होते हैं. उसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स आप बुक में से देख लीजिए. और वो लिपोप्रोटीन से बना हुआ होता है. सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बना हुआ होता है. फ्रीली परमिएबल होता है, नॉन लिविंग होता है और वो प्लांट सेल में सबसे बाहर होता है, क्योंकि प्लांट सेल में ये होता है, मतलब सेल वॉल सबसे बाहर होता है. एनिमल सेल में सबसे बाहर सेल मेम्ब्रेन होता है. इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन. ऑफ कोर्स सेल वॉल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन. अब साइटोप्लाज्म, वी विल सी अबाउट साइटोप्लाज्म. आपको पता है हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था. साइटोप्लाज्म इज ट्रांसपेरेंट, वाटरी, लाइक दैट. Now characteristics of cytoplasm.
all the parts together inside the plasma membrane excluding nucleus. मतलब जो भी पार्ट्स है उसके अंदर होता है वो, मतलब पार्ट्स के आजू बाजू में, न्यूक्लियस के आजू बाजू में. Contains a mixture of water and soluble inorganic and organic compounds and various organelles. Chief functions है different organelles contained in it perform different function. मतलब organelles मतलब कैसे, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, ये सारे ऑर्गेनेल्स हो गए. राइट, हमने अभी पढ़ा कि ऑर्गेनेल्स बहुत सारे होते हैं. गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे ऑर्गेनेल्स है. पर इन सब के अलग अलग फंक्शंस है, वो अलग अलग काम करते हैं सेल के अंदर. तो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स जो साइटोप्लाज्म में होते हैं वो अलग अलग फंक्शन करते हैं, उनके सब के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं. All metabolic activities occur in cytoplasm. Medium for initial steps of respiration, मतलब respiration के जो initial steps होते हैं वो cytoplasm से गुजरते हैं. अब आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ऐसा दिखता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. उसके characteristics है irregular network of double membrane tubules. You can see in your page number 4 there is a pic of endoplasmic reticulum, first box. You can see how it looks. Sometimes the ribosomes are attached to endoplasmic reticulum and sometimes they are not. It is continuous with plasma membrane on the outside and the nuclear membrane on the inside. मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके बाहर होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसके अंदर होता है. मे बी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्मूथ मतलब जब राइबोसोम्स अटैच नहीं है तब वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक होता है, मतलब विदाउट राइबोसोम्स. और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब राइबोसोम्स अटैच होते हैं उससे, इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब आते हैं चीफ फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. फर्स्ट फंक्शन इज सपोर्टिव फ्रेमवर्क फॉर द सेल. यस, इट सिंथेसाइजेस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन एंड फैट्स. जो प्रोटीन और फैट्स होते हैं उसे ट्रांसपोर्ट करता है और उसे सिंथेसाइज भी करता है. नाउ माइटोकॉन्ड्रिया. यू ऑल मस्ट हैव ड्रॉन द डायग्राम ऑफ एनिमल सेल, प्लांट सेल इन 9th standard and you must have drawn mitochondria. This is mitochondria. So characteristics. It is of various shapes. Means mitochondria is of various shapes, but usually it looks like sausage like. You can see it in your book. It is sausage like. It is double walled. It is inner wall thrown into folds. That is crystal. That I will show you here. Can you see this inner wall is thrown into stone? Means like this here. Okay, wait, let me. Can you see this? Okay, this is called, it is folds. Means inner wall is thrown into folds and this is only called as cristae. Cristae spelling is Cristae. Cristae. Okay, now have their own DNA. They have their own DNA and containing several genes. Also contain their own ribosomes. उनके खुद के ribosomes होते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया के. अब आते हैं चीफ फंक्शंस. रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम पायरुविक एसिड प्रोड्यूस्ड इन साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. एटीपी का फुल फॉर्म हमने पढ़ा था जो था एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. Seat of cellular aerobic respiration and stores energy. It synthesizes of respiratory enzymes. ये सब आपको लर्न ही करना होगा. अब आते हैं गोल्जी एपरेटिस. गोल्जी एपरेटिस ऐसा दिखता है. Characteristics उसके है stacks of flattened membrane sacs and consists of tubules, that is cisternae, vesicles and vacuoles. ये सब कुछ आपको characteristics, chief functions, ये सारा आपको learn ही करना होगा. Chief functions: synthesizes and secretion of enzymes, hormones, etc. and formation of acrosome of sperm, that is only in animal cell. It is not in a plant cell. Formation of acrosome of sperm, it is only in animal cell. It only forms in animal cell. Now ribosomes. This is ribosomes. I have told these small. These all are ribosomes that are sometimes attached to endoplasmic reticulum and hence called rough endoplasmic reticulum. Characteristics are small granules either scattered in the cytoplasm or attached to the outside of endoplasmic reticulum.
सिंगल वॉल्ड होते हैं, डेंस होते हैं, स्पेरिकल बॉडीज होती है और कंपोज मेनली ऑफ आरएनए। आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, चीफ फंक्शंस उसके हैं, वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, बस एक ही फंक्शन है इसका और राइबोसोम का, तो वो आपको याद रखना है। लाइसोसोम्स, दीज आर लाइसोसोम्स। कैरेक्टरिस्टिक्स है मेम्ब्रेनियस सैक्स बडेड ऑफ फ्रॉम गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी से वो मेम्ब्रेनियस सैक जो होते हैं वो जो होते हैं उसे लाइसोसोम्स कहते हैं। कंटेन 40 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, मतलब एक लाइसोसोम में 40 तरह के एंजाइम्स होते हैं। ओके, दीज आर कैरेक्टरिस्टिक। चीफ फंक्शन होता है वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है, डिस्ट्रॉय फॉरेन सब्सटेंसेस। फॉरेन सब्सटेंसेस मतलब जो गंदगी है या कुछ फॉरेन सब्सटेंस मतलब बाहर का कुछ कड़ा कुचरा कुछ भी होगा तो वो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। When cell is old or injured, this rapidly destroy organelles, hence called suicide bags. इसे suicide bags भी कहा जाता है, किसे? लाइसोसोम्स। डाइजेस्ट कार्टिलेजेस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, जब बोन्स हमारे फॉर्मेशन होते हैं मतलब सेल के जब बोन्स फॉर्म्ड होते हैं तब वो कार्टिलेज जो है वो डाइजेस्ट कर लेता है। Centrosome. Now we will look centrosome. This is centrosome. Characteristics. A region surrounding the centrioles located near nucleus. It is located near nucleus. It contains one or two centrioles and centrioles are surrounded by microtubules. Okay. Chief functions. Initiates and regulates cell division. Forms spindle fibers with the help of asters. Plastids. It is only in plant cells. Characteristics. Several kinds. Wait a minute. Several kinds, most common ones are chloroplast containing the green pigment chlorophyll. Double membrane proteinaceous matrix contain DNA. Disc-like structures called thylakoids contain chlorophyll. Okay. Chief functions. Chloroplast, green in color, trap solar energy for photosynthesis, contain the pigment chlorophyll. Leucoplast, colorless, store starch, have no pigment. Chromoplast, there are three plast, okay? Chloro, leuco, chromo. So CLC, okay? Or you can see LCC, any mnemonic you can make. Variously colored, impart color to flowers and fruits, contain the pigment xanthophyll. Yellow color pigment it is. Carotene, that is orange red pigment. They also indirectly help in pollination by attracting different pollinators which then help disperse seeds. मतलब वो जो pollinators होते हैं उसे attract करते हैं chromoplast और वो जो पॉलिनेटर्स आते हैं वो जो सीड्स लेके जाते हैं वो सारी तरह फैला देते हैं, मतलब पॉलिनेशन का भी ये होता है, इसमें होता है। न्यूक्लियस द किंग। Characteristics. Largest cell organelle. Yes, nucleus is the largest cell organelle. It is mostly spherical and it is dense. It is nuclear membrane with pores to allow substances to enter and leave. It has nuclear membrane to enter and leave. Contain network of thread-like structures called chromatin fibers which contain DNA. Chromatin fiber में DNA होता है, वो thread-like होती है और वो network जैसी दिखती है, जैसे हमारा मोबाइल का नेटवर्क होता है। Chief functions. Regulate cell functions. If remove the cell dies. Of course अगर nucleus निकाल दिया जाएगा तो cell मर जाएगा। Contain chromosomes, that is bearers of genes that contain hereditary characters. अब हम chromosomes का अगला चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको समझेगा जीन्स क्या होता है और वो सब कुछ। न्यूक्लियोलस, अब आते हैं न्यूक्लियोलस पे। कैरेक्टरिस्टिक्स है one or more round shaped substructures present inside the nucleus. Chief functions. Produces ribosomes, मतलब न्यूक्लियोलस जो होता है वो राइबोसोम्स को प्रोड्यूस करता है। पार्टिसिपेट्स इन प्रोटीन सिंथेसिस बाय फॉर्मिंग एंड स्टोरिंग आरएनए। आरएनए मैंने बताया राइबो न्यूक्लिक एसिड, वो फॉर्म करता है और उसे स्टोर भी करता है और वो प्रोटीन सिंथेसिस में भी पार्टिसिपेशन लेता है। जैसे हमारा एक्टिविटी होती है हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वैसे वो प्रोटीन सिंथेसिस में भी पार्टिसिपेट करता है। कौन? न्यूक्लियोलस। Dictates ribosomes to synthesize proteins. Okay, this is one chief function. Chromatin fiber very important. Chromatin fiber मतलब आपको ये जो थ्रेड दिख रहे हैं ना, राइट, ये छोटे छोटे ऐसे थ्रेड
ये सारे जा रहे हैं यहाँ से यहाँ से। ये सारी जो थ्रेड दिख रहे हैं वो सारे क्रोमैटिन फाइबर्स है जो बाद में कंडेंस हो जाते हैं और उसका क्रोमोसोम बनता है। वो सब कुछ हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक, अ फाइन थ्रेड लाइक नेटवर्क इन द रेस्टिंग स्टेज ऑफ द न्यूक्लियस विच कंडेंसेस इनटू क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन होता है तो वो क्रोमोसोम्स बनते हैं कंडेंस होके। मेड अप ऑफ डीएनए थ्रेड्स, ऑफ कोर्स इट इज मेड अप ऑफ डीएनए थ्रेड्स। Of chief functions, chromosomes carry genes which are carriers of hereditary information from parents to offspring. Genes जो होते हैं वो हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग मतलब न्यू बेबी को। अब आते हैं वैक्यूल्स। दीज आर वैक्यूल्स एंड एक्चुअली वैक्यूल्स एंड ग्रैन्यूल्स आर नॉन लिविंग, ओके, सो दे कम इन सेल इंक्लूजन्स वी हैव स्टडीड राइट नाउ, राइट? The non-living are called cell inclusions. Clear spaces with water or other substances in solution. Plant cell have few but larger vacuoles while the animal cell has smaller one. मतलब plant cell को बड़े vacuoles होते हैं, animal cell को छोटे vacuoles होते हैं. They are covered by covering called tonoplast. It can be asked what is the covering, so it is called as tonoplast. अब आते हैं चीफ फंक्शन पे। स्टोरेज ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस, फूड, पिगमेंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, गिव रिजिडिटी टू प्लांट सेल बाय प्रेसिंग अगेंस्ट सेल वॉल, कंटेन पिगमेंट्स लाइक एंथोसाइनिन्स, वायलेट ब्लू कलर एक्सेट्रा। एंथोसाइनिन जो होते हैं वो वायलेट ब्लू कलर के होते हैं। ग्रैन्यूल्स, नाउ दीज आर ग्रैन्यूल्स, दिस यू कैन सी ऑल दिस स्मॉल स्मॉल स्मॉल, दीज आर ग्रैन्यूल्स। कैरेक्टरिस्टिक एक ही है, वो है स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, क्रिस्टल्स जैसे दिखते हैं और ड्रॉपलेट्स जैसे दिखते हैं ऑफकोर्स। चीफ फंक्शन भी एक ही है, इट स्टोर्स स्टार्च इन प्लांट सेल एंड ग्लाइकोजन इन एनिमल सेल एंड फैट ड्रॉपलेट्स विच सर्व एज फूड फॉर सेल। मतलब जो फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो फूड होता है सेल का, उसे भी वो मतलब स्टोर करके रखते हैं। और प्लांट सेल में वो खासकर स्टार्च स्टोर करते हैं और एनिमल सेल में ग्लाइकोजन स्टोर करते हैं। A very big thank you to reach the end of this video. In next video we will be doing last part of this chapter, that will be difference between plant and animal cell, which is the table given in our book, and microscopic examination of onion peel. That activity I will explain you. Till then, subscribe and most importantly press the bell icon. If you haven't subscribed yet, please subscribe and press the bell icon. That is important to press the bell icon so that you will get the notification whenever I upload my new video. Till then, also like if you like the video. Till then, bye bye.